I feel obliged to introduce to you all Mrs. Shilpi Goel. She is a nutrition expert, certified functional medicine practitioner, health and wellness speaker, and an author. She is also the founder of the firm Nutrishilp, which aims at blending the traditional food culture with modern nutritional science for a healthy body and mind. हेल्थ फिटनेस क्यों जानना जरूरी है इसके बारे में। हम तो यंगस्टर हैं, अभी तो खाने पीने की एज है, एंजॉय करने की एज है, और क्यों जाना है हमें हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में। एक ट्रुथ है वो ये है कि कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती है। जैसे आप हमेशा देखते होंगे ना कि अभी आप मम्मी पापा को देखते हैं, अपने बाबा दादी को देखते हैं कि डायबिटीज डायग्नोस हो रही है, फैटी लिवर हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अभी तो यंगस्टर्स भी इससे पीछे नहीं है, अभी तो यंगस्टर्स को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका एक क्विक फिक्स लेने की कोशिश करते हैं। सिर में दर्द है, हम उसके रूट कॉज पे नहीं जाते हैं। एसिडिटी हो रही है, हम उसके रूट कॉज पे नहीं जाते हैं। हम क्या करते हैं, एंटासिड खा लेते हैं। सिर में दर्द हो रहा है, उसके रूट कॉज पे नहीं जाएंगे, एक दवाई खा लेंगे हेडेक की। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चीज जहाँ से जनरेट होती है उसके रूट कॉज पे काम करना बहुत जरूरी है। अक्सर मैं ये बोलती हूँ कि योर बॉडी इज अ व्हीकल, आप उसके ड्राइवर हो और आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है अपनी बॉडी की अटमोस्ट टेक केयर करने की, क्योंकि आपकी बॉडी ही है जो आपको अल्टीमेटली आपके गोल तक पहुंचाएगी। Hello, my name is Shreya Chaudhary. So we had a good session on nutrition today with Shilpi ma'am, and I came to know about a lot of things. I had a lot of misconceptions about nutrition, misconceptions about intermittent fasting and eating at regular intervals, missing breakfast. So those misconceptions were cleared by Shilpi ma'am. I think I'm taking back a lot of information, and I'll try to inculcate those in my life. I think the session was very informative. I mean, I got to learn a lot of things from Mrs. Shilpi Goel. Firstly, I would always run after, crash diets whenever I wanted to lose weight or something of that sort. But what she taught me that temporary crashes doesn't work. It's always the permanent fixes that would work in the long run. So that's why my one major takeaway from this session. And I think overall I loved her aura. I loved the key learnings that shared with all of us. That's it. I'm Professor R.K. Jana, looking after student affairs. I enjoyed today's session. It was really nice and encouraging for us, for our students. Specifically, ma'am mentioned about the healthy habits, different pillars of being or keeping ourselves healthy. I believe that our students, our community would follow, and this type of motivating talks will ultimately help to be fit, and that's why I would like to thank Shilpi ma'am for all her reports. Thank you so much.